अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ इस तरह। म्यूट कर दे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम हमदान है और मैं अल्हम्द इस्लामिक सेंटर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। जो हम ये कोर्सेज करा रहे हैं इसको लेके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और हम पिछले 6 ईयर से सर्व कर रहा हूँ अल्हम्द इस्लामिक सेंटर में। बेसिकली अल्हम्द इस्लामिक सेंटर हमारा, हम वर्ल्ड वाइड कुरान पाक पढ़ाते हैं और होम स्कूलिंग जैसे बाकी साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इसकी होम ट्यूटिंग देते हैं। जैसे ऑनलाइन सारे सेशंस होते हैं हमारे। तो अब हमने यूएस और यूके का एक्सपीरियंस हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूएस और यूके में। तो अब हमने सोचा कि हम इसको क्यों ना पाकिस्तान में भी लाइव करें, यानी यहाँ पर भी कुछ कोर्सेज लॉन्च करें ताकि यहाँ के लोगों के लिए, जो लोकल लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं वो कर सकते, परचेज कर सकते कोर्सेज, तो उनके लिए हमने ना एक बहुत मिनिमम से अमाउंट में कुछ कोर्सेज लेके आए, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज हैं, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के कोर्सेज थे। बेसिकली इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फिजिकल स्टाफ है वो 150 प्लस ऑफिस बेस्ड वर्क कर रहा है और उसके अलावा हमारे पास 1500 प्लस वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो अब हमने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ इन्हें यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया और इसको इस तरह डिज़ाइन किया कि 1 मंथ के अंदर इंसान ये चीज़ सीख सके कि बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक कैसे जाया जा सकता है, जिसमें आप डेली कन्वर्सेशन सीख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रामर, आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बेसिक कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। जो आपको मतलब जैसे अक्सर आपने देखा होगा लोगों को इंग्लिश आती होती है लेकिन वो हेजिटेट होते हैं बोलते हुए, वो मतलब बातचीत नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स लॉन्च किया था और हमने इसकी एक बहुत मिनिमम सी अमाउंट रखी कि पहले, क्योंकि जो हमारे पिछले बैचेस थे, ये बैच 1 8 है, इससे पहले जो बैचेस थे हमने कुछ फ्री भी रखे थे। लेकिन उस समय ये नुकसान हुआ, हमने देखा कि लोग फर्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते थे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वीक आता था या नेक्स्ट वीक मतलब फर्स्ट वीक में तो बहुत मोटिवेट रहते थे, नेक्स्ट वीक में आहिस्ता-आहिस्ता अपने मतलब काम स्टार्ट कर देते थे, रेगुलर क्लासेस नहीं जॉइन करते थे। तो हमने इस वजह से ना हमने ये एक मिनिमम सी अमाउंट रखी ताकि लोग कंसिस्टेंट रहें और आते रहें रोज़, मतलब उन्हें, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जो चीज़ जब तक लोग कमिटमेंट नहीं करते, वो इस चीज़ पर फोकस नहीं होते। तो इसीलिए फिर हमने एक बहुत मिनिमम सी अमाउंट रखी। इसी के साथ हम क्योंकि आज का डेमो सेशन स्टार्ट करेंगे, हमारी जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी मैम सन्या, वो आपको बताएँगे कि हमने इसको कैसे 1 मंथ में डिज़ाइन किया है और कैसे इसको डिफरेंशिएट किया कि ये 1 मंथ में हो गया। क्योंकि हमें बहुत से ऐसे मैसेज रिसीव हो रहे थे कि सर आपने कैसे 1 मंथ में इसको डिफरेंशिएट किया है कि आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक हमें लेके जाएँगे, सिर्फ वो भी 1 मंथ में। तो मैम सन्या आपको ये चीज़ बताएँगी कि हमने इसको किस तरह डिज़ाइन किया है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मैम सन्या आएँ और आप लोगों की क्लास ले लें। ठीक है, बिल्कुल इसको आप रोकें। All right. Assalamu alaikum, everyone. It's me, Sania Malik Khalid. Thank you so much for joining this session and giving your precious time. All right, class. Uh, as you all know, I'm Sania Malik Khalid, and I have been working in this field of English spoken and IELTS from last 9 years. I have worked with multiple organizations, and currently I'm working with the sub branch of Alham Islamic Center, that is East Study World, as an HOD of Spoken English Department. Okay? And we are dealing both with the international students and as well as the local students as well. All right, class. So as you know that we are offering the 1 month course of spoken English both at basic level and intermediate level, but this is for the intermediate level. ठीक है, तो बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन था कि आप लोगों ने इस कोर्स को क्या डिज़ाइन किया है, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज है जब यूज़ करेंगे जो हम 1 मंथ में इसको अक्वायर कर देंगे। जाहिर है कि हमारा एक मतलब
स्पेसिफिकली मेरा हमारा 9 साल से एक एक्सपीरियंस रह चुका है। सो हमारा ये होता था कि वी यूज टू ऑब्जर्व द टीचर्स, हम टीचर्स, सॉरी द स्टूडेंट्स, हम जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे हम उनको ऑब्जर्व करते थे एंड वी यूज टू लुक इनटू इट दैट व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, okay, what is the main hurdle that is creating that language barrier, जिसकी वजह से हमारे इतने अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग हैं वो आगे नहीं जा पा रहे। ये सो हमारे पाकिस्तान में हमारे लोगों में they are very talented people, they have really good skills and they wish to go abroad for higher studies, या उनके अपने पाकिस्तान में हमारे ही पाकिस्तान में लैंग्वेज की डिमांड होती है, ठीक है, जिस पे हमारी डेजिग्नेशन मोस्टली हमारी डेजिग्नेशंस रिलाई करती हैं, ठीक है। देन देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु विश टू गो अब्रॉड एंड टू कंटिन्यू विद देयर करियर्स एंड विद देयर हाई स्टडीज, लेकिन ये जो एक लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है, ये जो एक बैरियर आ जाता है लैंग्वेज का, इसकी वजह से वो मार खा लेते हैं। तो हमारी टीम बैठी और हमने क्या किया कि हमने एक मंथ में एक ऐसा अफोर्डेबल कोर्स हमने डिज़ाइन किया that is legit for all the intermediate students, ठीक है, कि वो एक मंथ में जो उनके स्किल्स हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स हैं, उनको इन्हांस भी कर दे, गौर से सुनिएगा मेरी बात, इन्हांस भी कर दे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रूम हो जाए एंड दे आर वेल इनफ टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल्स एंड द नेटिव ऑफ इंग्लिश स्पीकर स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या किया कि हमने वो मेन क्रक्स हमने उसको निकाला और उस पे हमने एडिशनल काम किया है, ठीक है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी वो हमने बनाई है, फिर हमने उनको ट्राई किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं, यस दे आर प्रूवन और उन्होंने हमें रिजल्ट्स दिया है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, व्हाट वी हैव डन, okay, we have designed the course in such a way that it will going to have designed the course in such a way that it can interconnects the chain of all the four modules with each other: speaking, reading, writing and listening, okay. So how we will going to work that in the first week we will with the repetition of the basic grammar in such a way कि वो आपको एक concept देगी कि अगर आप डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं तो आप में कौन सा स्ट्रक्चर है अप्लाई होता है और वो क्यों अप्लाई होता है, उसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है, अगर वर्ब V1 लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, पास में बात करें V2 लग रहा है तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, वो आपको एक कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर देता है कि वो आपकी ऑटोमेटिकली आप उस पर ग्रिप होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि उसमें हम जो फर्स्ट वीक है उसमें ये करेंगे कि हम आपको फिर कन्वर्सेशन सेशन में हम आपको सेंटेंसेस से 4 to लाइक स्टेटमेंट्स, ठीक है, लॉन्ग स्टेटमेंट्स, फिर उसमें हम पैराग्राफ्स में आ जाते हैं, ठीक है। एंड वी विल गोइंग टू गिव यू अ फ्री प्लेटफॉर्म टू स्पीक विद फ्लुएंसी, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे, सेकेंड वीक में वी विल गोना गिव यू द बेसिक एडवांस एक्सप्रेशन, ठीक है, the use of contraction form, the use of basic advanced expression, all right, and we will going to conduct the session in a way कि आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट राइट देयर आप लोग इसको वहीं पे ही इस पे ग्रिप होल्ड करेंगे, प्लस आप लोग खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो हो रहा है, लाइक ऑटोमेटिकली आपका जो ये स्टक होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन आते ये खत्म होती चली जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड वीक में हम आपकी वोकेबलरीज के साथ काम करेंगे, ठीक है, वोकेबलरीज के साथ काम करेंगे और साथ ही साथ आपकी बेसिक ग्रामर की रिपीटिशन के साथ साथ आप लोगों का जो बेसिक एक्सप्रेशन है उसमें हम आपको फ्री प्लेटफॉर्म देंगे कि उसमें आप जो है उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि उसमें आप बहुत अच्छे से ग्रिप होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि उसके साथ साथ ये है कि ऑनलाइन ही सेशंस हम लोग आपस में आप लोगों की कन्वर्सेशंस करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, इन द फॉर्म ऑफ रीडर्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइक किस हर फॉर्म में हम आप लोगों को इंटरेक्ट करवाएंगे आपस में भी और हमारे साथ भी,
ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि आप लोगों को, क्योंकि जो आप लोगों का कन्वर्सेशन सेशन होगा उसमें यही नहीं होगा कि दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद मी ओनली और विद योर इंस्ट्रक्टर ओनली, ठीक है। जब आपका एक जो फाइनल, उसमें हम थर्ड थर्ड वीक में जबकि फाइनल कन्वर्सेशन होगी, उसमें यू आर गोइंग टू मीट अप विद डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर, ताकि आप लोगों को हर बंदे के साथ बात करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्ड होता जाए, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ हम आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपकी आइज कहाँ होनी चाहिए, ठीक है, आपका माइंड किस तरह से प्रोसेस कर रहा हो, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, आप लोग फ्लुएंसी के साथ बोल भी सकें, ठीक है। और कॉन्फिडेंटली आप लोग एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एट द स्पॉट आप यूज कर लें, ठीक है। दैट्स दैट्स हाउ वी हैव वर्कड ऑन, ठीक है। फोर्थ में आपकी प्रोनाउंसिएशन, यस दिस इज द मेन थिंग, pronunciation that makes you to speak like in a British accent or the American accent, ठीक है। हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के फाइनल रिव्यूज होंगे, ठीक है, हमारी फाइनल जजमेंट होगी। एंड विद इन दिस 1 मंथ इंशाल्लाह, इफ यू गोना फॉलो अस, ठीक है। आप लोगों की एफर्ट्स ये हैं कि आप लोगों ने सिर्फ इतना एफर्ट करना है कि आपने हमें ड्यूरिंग क्लास यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है। फिर आप लोगों को जो होमवर्क्स जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, आप लोगों ने उस तरह से अपने होमवर्क्स को भी यू हैव टू कंडक्ट, ऑलराइट। and within a month you'll be acquired, you'll see the difference, that you will feel that you have enhanced your spoken English skills with the confidence building, fluency, basic advanced vocabulary, pronunciation, and the use of correct grammatical structure. All right, so this is how we're going to work with it, okay. And this work is like, it was not like 2 days or 3 days work. इस सिलेबस को डिजाइन करते बड़ा टाइम लग गया, we have given our time, and it was a really pain taking job, कि हमने, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हमारे लोगों को जो है इसका एक प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, ठीक है। क्योंकि यू नो दैट द लैंग्वेजेस nowadays even in this era they are really expensive, ठीक है। हमारी कोशिश है कि हमारे लोग यहीं पे ही easily इस मिनिमम इसमें इसको अच्छे से अटेन कर लें, and then they don't have to spend thousands and thousands on it, all right class. That's all I want to deliver, but I have also designed a small trial session, a lesson that I would like to give you today live, ठीक है। उसमें यह कि अगर मज़ीद आप लोगों में आप लोगों के कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाए। और इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है दैट आज भी अगर आप लोग इस लेसन को अटेंड, आपको इस लेसन को अटेंड करते हैं, इफ यू बी अटेंडिंग दिस लेसन, सो I guarantee you that you'll be learning something from this platform. That's the first lesson, and you're taking something from this first lesson as a gift from our side, a gift from Alham Islamic Center, a gift from eStudy World, a gift from Ma'am Sania Malik Khalid. All right. Thank you. All right, class, I'm taking a short break, a recess of 1 minute, all right, and then I'll be back with the lesson. Thank you.
All right, class, the interested candidates are requested to join the link that is given in the description box, chat box, ठीक है? इसको जल्दी से ज्वाइन करें जो कुछ भी आप लोगों के हाथ में, whether you have copies in your hand, the notepads in your hand, all right, or you have the iPads or a mobile phone, just grab it and join this link that is given below in the chat box and take your first lesson as a gift from our side. Please, take it as a gift from our side. Thank you. So productive. Yes, yes, Kareem Raja. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Okay, Kareem Raja, thank you so much for joining this lesson. ठीक है, जैसे सब लोग आते हैं तो फिर हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. ओके, प्लीज स्टे कनेक्टेड. ऑलराइट. Okay. बल्कि ये है कि चलें ठीक है, सेकंड वाला लेकर है, सेकंड वाला पहले करवा देती हूँ. Okay. So, All right, class. Let's begin with this basic lesson first, and then we will go to another one. All right. Okay, class. Can you read the expression that is written on the screen? Yes. Can someone read it? Yes, Raja. Can you read it? अच्छा, नहीं वो कहीं गया हुआ था. Yes, Mr. Kalim, can you read the first expression that is written on the board on the slide? yeah, Read it, please. I want to. I want. You already know that we use this expression when we want something. Okay. Now, when we write, we just write it as WANT want. Okay. But how we will going to pronounce it? But whenever we need to use this expression, so we never say I wanna. We always say I wanna. What do we say? I wanna. I wanna, okay? If I ask you, for example, we are in a coffee shop, okay, and you come to me Yeah, and you ask me, and I ask you, what do you want, please? So how you gonna say, and for example, you need coffee and cake. So how you gonna say? yes, You will say, I want a coffee. What are you gonna say? I want a coffee. Coffee. Okay. If you need a cake, what are you gonna say? I want a cake. I want a cake. Very good. If you need a paper, what are you gonna say? I want a paper. I want a paper. If you need a pen, what are you gonna say? I want a pen. I wanna. What did you say? I wanna. क्या कहते हैं? Pen. Wanna. ठीक है? Wanna. What do you say? I wanna. Yes. I want a coffee. I want a cake. Say after me. I want a coffee. I want a coffee. I want a cake. I want a cake. I want a food.
I want a food. I want a pen. I want a pen. Okay. The sentence seems to be very basic, I know, but what was our goal? Our goal was to speak the same expression with the basic advance, within a basic advanced expression, like in a contraction form, in a contraction form. Okay, so Okay. आज के बाद से whenever you're going to use this sentence, you will going to use it like this. All right. Okay, this will make you speak like the natives. All right. Okay. Now, coming up to the self-introduction session, please. The first slide. All right. Okay. Now we were gonna work with your self-introduction. I know self-introduction is a very basic thing, but as I have mentioned earlier in the earlier classes, कि हमने earlier classes में ये बात की थी कि that we were going to work with the basic advanced expression plus we were going to give you a vocabularies on that point कि आप वहीं पे उस चीज पे grip hold कर लें ठीक है तो ये बना ही इस तरह से है all right Klee, if I ask you about self introduction what does self introduction mean what comes in your mind I want you to express your ideas yes Maria Assalamu alaikum Maria can you hear me yes Maria Assalamu alaikum Maria, your mic is mute. I would like you to unmute your mic and interact with me. Okay, all right. So let's come back to the self-introduction sessions. Chi, when you hear the word self-introduction, what comes in your mind? I am a Khalil. Okay, I carry on. am 25 years old. Excellent. Okay, I am a okay. Native. I am a native. native. ठीक है? Exactly. All right. So, Kareem, if I ask Native. you a question, ठीक है चलें इस लेसन को कंडक्ट करते हैं प्रॉपरली if I ask you guys a question what's your name may I know what's your name please क्या आंसर होगा आप लोगों का I am. क्या My name is Khalil. I am Kareem ठीक है now is that we write it I am we write it I am but to make it bit advanced we use a contraction form we use a contraction form हमने I am नहीं बोलना हमने बोलना I'm क्या बोलेंगे हम I. I. I'm I'm okay like A is eliminated I'm क्या कहेंगे I am. I'm 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 clean क्या कहेंगे I'm Khalil. okay if it's I am Maria Khalil. या अगर मारिया है तो मारिया कहेंगी I'm Maria अगर सना है तो सना कहेंगी I'm सना अगर अली है तो अली कहेंगे I'm अली okay so this is and remember one thing कि if someone asks you about your name so make sure they're asking you about your name so you just have to mention your name only ठीक है आप लोगों ने अपना full name नहीं बोलना ठीक है until Okay. and unless you're asked to tell your full name ठीक है all right Kalim if I ask you about your age please may I know what's your age तो आपका क्या आंसर होगा Um, I'm 25 years old. okay it's not years it's years what is it Years. year what do you say uh, years Years. years old. Very good. Years Okay. old. Can you read the third line? I am a native of. Native. What's Okay. mean native? Native. Native Okay. means. Native is basically if someone asks you about your country, which country do you belong Oh. to? Okay. Or what's your Oh. country name? All right.
So instead of saying my country name or I belong to, simply I belong. make it sound a little advanced. You can say I'm a native of. What do you say? I'm a native of. Native of. Like we all belong to Pakistan, so you're gonna say I'm a native of Pakistan. What are you gonna say? Pakistan. I'm a native of Pakistan. What are you gonna say? I'm a native of Pakistan. Yeah. If someone belongs to America, वो क्या कहेंगे? And If someone belongs to America, वो क्या कहेंगे? I'm a native of America. Very good. Someone belongs to China, वो क्या कहेंगे? No, China. If someone belongs to Saudi Arabia, वो क्या कहेंगे? I'm a native of Saudi Arabia. Very good. Read the next line, please. My hometown is town. Okay. Do you have an idea about the hometown? Yeah, Gilgit. No? Okay. Hometown is your birthplace. Okay. Hmm? Your village, your town. ठीक है? All right. Okay. ठीक है. If someone asks you about your hometown, if someone asks you about your birthplace, ठीक है, instead of saying कि इसके बजाय आप ये बोलें कि my hometown, my birthplace is this, or I was born in this, ठीक है, और this, my city name is this, ये सब कहने के बजाय आप simply कहें my hometown is, क्या कहेंगे? Hometown My hometown is. So what is your hometown? Where were you born? is Gahkuch. Sialkot. Gilgit, Sialkot. Gahkuch. Sorry? Gilgit, Gahkuch. Gilgit. Sialkot. धन्यवाद। Okay. So नहीं, you're gonna जैसे say जिस मतलब my यहाँ alright. So you're simply gonna say my hometown is Sialkot. क्या कहेंगे? गिलगित my Gilgit hometown is Baltistan. Sialkot. Okay, so you're simply gonna say my hometown is Sialkot. If someone belongs to Gilgit Baltistan, वो कहेंगे my hometown is Gilgit Baltistan. If someone belongs to Chitral, वो कहेंगे my hometown is Chitral. ठीक है? Okay. All right. Now we have next. Okay, read the next line. My hobby is My hobbies. football. Okay. What? Okay, that's good. It's mean that you already know about hobbies. All right. But still, I want you to tell me what's the meaning of hobby, Kareem? Rizwan, do you want to मशगला think what's the meaning of hobby? हम्म. मशगला मशगला एक हमारा जो इंटरेस्ट है, राइट? All right. Okay. So दिलचस्पी रखें. जी. So the other word जैसे कि as we have studied earlier कि native की जगह country की जगह native भी use होता है. That is the first second basic expression. पहला क्या था कि I want को हमने किस तरह से pronounce करना है I wanna. ठीक है. सेकंड में क्या है हमने नेटिव के बारे में पढ़ा. ठीक है. अब थर्ड में ये है हॉबीज के बारे में पढ़ना है. सो the other word for hobby is interest. The other word for hobby is interest. The other word for hobby is Interest. exactly. So instead of saying my hobby is or my hobbies are, you can simply say my interest is. For example, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है. मैं कहती हूँ my hobby is cooking. What will be the base? So in order to make it sound more well, I will say my interest is cooking. Interest. Like interest, exactly. Instead of saying my hobby is football, you can say my interest is playing football. My interest is playing football. Football. So hobbies को हम क्या कहेंगे? Interest. My interest Interest. is playing games. My hobby is playing games. अब एक ही सेंटेंस था जो हॉबी से था उसको मैंने इंटरेस्ट से किया.
ठीक है? All right. So what are your hobbies? My hobby is football. But you have to say it with the advanced expression that is interest. अब हॉबी को भूल जाएं. अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट से बतानी Yes, है. ठीक है? I said my football. My interest is in football. All right. ठीक है. रिजवान कलीम अब आपने क्या करना है कि My interest. you will going to give your introduction with the same expressions. All right, start. मेहरबानी यार, तो मैं साइड पे हो जाऊँ। तो जाओ, वो थोड़े साइड पे जाओ। जाओ यार। Yes, Rizwan. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Ji Rizwan, you joined a bit late, but you were listening to us. How did you find the session? Ma'am, it is very interesting and I am uh, Mhm. inspired to join. Thank you so much, Rizwan. And if you take the regular classes, तो जो बातें मैंने पहले बताई हैं, you will going to opt these, ठीक है? So Rizwan, let's start with the basic, the first lesson that we are doing it, ठीक है? Okay. Please slide. Alright. Okay, Rizwan, can you read the expression that is given on the screen? The first expression, Yes, I want a coffee. I want a coffee. Okay, so this is word want. Being Okay. being a student at intermediate level, you already know that want is used when you need something, right? Exactly. Yes. All right. So, if you visit in abroad countries or even the restaurants of Pakistan, so आपको ये जरूरत पड़ जाती है, ठीक है? So we will going Mm, to learn how to use it with the contraction form. All right. So how you're gonna okay. say instead of saying I want a, you will gonna say I wanna. What are you gonna say? I wanna. I wanna. If I go I to a want a restaurant, coffee. I want a coffee. Okay. Read the next. I wanna. Say the next one, cake. Keep speaking. Hello. Yes, Rizwan, keep speaking. I wanna. Ma'am, I cannot getting your voice. Okay. All right. Rizwan, I was saying that carry on with the other things as well. I want a Okay, coffee. I want a coffee. I want a cake. Uh, I want a blanket. I want a Mhm. food. I want a paper and I want a pen. Uh, Exactly. This is the thing that while writing, we just write it WANT want as a demand of academics, but while speaking, we always have to use this word as a with this contraction form with the contraction con- form. Okay. contraction. All right. Okay. Coming back to the self introduction. Okay, contraction. All Yes, right. ma'am. All right. Come back to the self introduction. Let's change the slide. Okay. First one. Yes. Okay. So let me give you a quick review that what we were learning basically. Okay. Okay. Kaleem, I also want you to participate because you were taking the lecture earlier as well. All right. So self introduction. When we're gonna learn the self introduction with the same basic advanced expression to sound more interesting. All right. Okay. So if I ask you a question, what's your name or your name, please? How you gonna say? I am Rajwan Ali.
All right. Okay, Kalim, what's your Yes, name? ma'am. My name is Clean. My I'm a name is Clean. Kalim. Why my name? You have to I, use the basic I Spanish. I'm Kalim. I'm a Okay, Clean. exactly. When someone asks you a question or someone asks you about your name, what is your name? Your name, please. So instead of saying my name is, आप लोगों ने क्या कहना है? I am. What are you gonna say? I am. I, I am. Okay. Now you have to ensure a difference that you are asked your full name or you're just asked to tell your name only. If someone asks you what's your name or your name please, so you're simply going to tell your name. Like if someone asks you what's your name, I'll say I am Sania. Yes, Kalim, your name please. I am Clean. Rizwan, Yes, ma'am. what's your name? My name is Rizwan Ali. But you have to express with the basic advanced one. I am Okay, okay. Rizwan. I am Rizwan Ali. Exactly. I am Rizwan. That's all. Okay. All Okay. right. If someone asks you about your age, what's your age, or tell me about your age, how you're gonna answer? I am 24 years old. Years old. Kalim. I'm 25 years old. Excellent. Okay. Third line. Kalim, read the third line. I'm native of I'm a Pakistan. I'm a native. I'm a Native, native. native of Pakistan. Native. Rizwan, can you see this word in the third line? Yes. Yes, ma'am. I am a native of Sindh. Okay, okay. Native here basically, if someone asks you about your country, all right, Okay. what's your Okay. country name or which country do you belong to? So instead of saying my country name is or I belong to this country, simply say like I'm a native of Pakistan. What are you gonna say? I am a native of Pakistan. I am a native of Pakistan. Okay, all right. If someone, okay, very good. Someone belongs to America, what will he say? Yes, Kalim. I'm native of America. America. Rizwan, if someone belongs to China, what will he say? Yes. If someone belongs to China, what will he say? I'm a native of China. I'm a native of China. Okay, all right. Then next we have hobbies. We have hobbies. As you know, that the other name for hobby is interest. Hobby is interest. If I want to say that my hobby is cooking, so I'm going to say my interest is cooking. If I say my hobby is reading books, so I'll say my interest is reading books. If I say my hobby is skating and archery, so I will say my interest is skating and archery. All right. So Kalim, yes, what's your hobby? My hobby is football. My And my interest is My interest is football. All right, now I want you to give me the introduction within the lines that we have learned today. इन्हीं lines को बोल के आप अपना एक छोटा सा introduction दे दे बेशक देख के बोलें. I know it's your first class. Yes, start. Rizwan. Yeah, man. Yes, Kalim. I'm a Clean. Hmm. 25 years old. Okay. I'm a native of Pakistan. Hmm. My hometown is Gilgit. Okay. Uh, my interest is football. Excellent. Great. You did a great job. I appreciate this. Now, what do you have to do next?
that keep the notes in front of you. ठीक है? Sit somewhere in an empty room, in a silence. Give yourself this introduction 3 to 4 times by looking at the notes and then without looking at the notes. ठीक है? फिर रेगुलर क्लास में आप आके मुझे अपना रिजल्ट दीजिएगा. All right, class, that's all for today. Those who have joined us, thank you so much. And inshallah, we will meet in our regular classes with the proper schedule, proper syllabus, proper activities, and will implement the proper strategies. बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में और आप लोग सीखेंगे भी and inshallah in the end of the month you will have a productive results. आप लोग खुद कहेंगे, खुद आके कहेंगे कि yes, we have learned something and वाकई में ये गिफ्ट ही था हम सब के लिए. All right, class. So best of luck for your regular classes that will going to start from 2nd of February. All right, and inshallah we will meet in the regular classes. This is Sania Malik Khalid. Thank you so much for your time. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये क्लास उम्मीद करता हूँ आप सबकी अच्छी हुई होगी क्लास। तो आप में से अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दें, जिसकी कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है या ओवरऑल कोई भी बातचीत है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर किसी ने लाइव कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी मैसेज कर दें, मैं उसको लाइव ले लूँगा, मसला नहीं है। डेली क्लास होगी जी, ये 1 वीक में 5 दिन क्लास होगी और रेगुलर क्लासेस इंशाल्लाह 2 फरवरी से स्टार्ट होगी। और नेक्स्ट क्या है? सॉरी, इसको रेगुलर क्लास किस टाइम होगी? मैं जॉब पे होता हूँ। मैंने बता दिया, रेगुलर क्लासेस 9 बजे होंगी और 2 फरवरी से होंगी 9 पीएम टू 10 पीएम और 10 पीएम टू 11 पीएम। इंशाल्लाह इन्हीं में से ही एक टाइम रखेंगे डेमो क्लास, वो जो रेगुलर क्लासेस होंगी। और उसके अलावा हमारी यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, गूगल मीट या जूम पर होगी क्लास, जो रेगुलर क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लास इंशाल्लाह होंगी। ओके, रिजवान अली स्टूडियो, आई थिंक इनका क्वेश्चन है, पूछ लें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, आपने अभी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करवानी है और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि स्क्रीनशॉट जो जिस नंबर पर आपने मैसेज किया था एड्स के बाद, ऐड देखने के बाद आपने उसी नंबर पर शेयर करना है, तो उसमें आपको बाकी न्यू ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो बैच 1-8 का ग्रुप होगा, आपने उसमें ऐड होके आप जो रेगुलर क्लासेस हैं रोज आपके लिए आ जाया करेगा और आपने क्लास ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, कर दें। और मुझे भी टीम ये बता रही थी कि ग्रुप में आ गई हुई है बैंक डिटेल, आप लोग अगर एक दफ़ा किसी ने विज़िट करना है तो कर लें। और उसके अलावा ये रिकॉर्डेड सेशन है, बाकी जो नहीं भी देख सके वो बेशक इसको बाद में विज़िट कर लें। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई थी, डेमो सेशन इतना लंबा नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।